I want to cut across now, Preeti, along with you to Gaurav, who's on the road, on the streets of Kyiv. He's driving to give us an incredible sense of what the city looks like as there is a threat of a cruise missile strike. Gaurav, giving you a live view of what it looks like to be driving through Kyiv right now. Gaurav, we can see you. You're behind the wheel. Take us through what you're seeing. Shiv, we are driving through the heart of Kyiv at this point of time, and I want our viewers to take a look at this city. This used to be a bustling city, but today there's virtually no one. All the vehicles that you see are heading out of the city. Very few people want to remain here. That's point one. Point two, they're waiting for this imminent attack, and just the few shops that have opened for some time is only so that people can buy milk, bread, vegetables, other things, and also medicines. Shiv, with me is a very prominent businessman here of Kyiv, Mr. Kuldeep Kumar. He's Indian, but he's also Ukrainian. He's married to a Ukrainian lady. His children are Ukrainian. And Kuldeep Kumar ji, क्या यूक्रेन पर हमला, क्या कीव पर हमला अगले कुछ घंटों में होने वाला है? क्या इस पर अब आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आप लगातार संपर्क में हैं आर्मी के भी और पुलिस के भी? देखिए, जो उस हिसाब से तो हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं कि किसी भी टाइम पे हमला हो सकता है, लेकिन आज फिर वार्तालाप शुरू हुआ है। जो वार्तालाप होगा फिर आज से, कि शायद हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सीज फायर हो और कंप्रोमाइज़ के कुछ चांसेस बने कि कंप्रोमाइज़ हो सके रूस और यूक्रेन के अंदर, क्योंकि लोग डरे हुए भी हैं और लोगों में इतनी वॉर के लिए इतना ज़बरदस्त उनमें जज्बा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम खाली हाथों से भी लड़ेंगे। लेकिन ये शब्दों की बातें हैं, हथियारों की कमी, जैसे अभी बात कर रहे थे, हथियारों की कमी तो है, लेकिन हमारे को पूरा यूरोप इस समय सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, और इंडिया से भी आग्रह है। We are at a military barricade, and at checkpoint the checking is very severe. They check your passport, they check your documents, any sign of suspicion. Watch these images. If somebody is found to be suspicious, the police stops them, frisks them, and then really takes strict action. Shiv, this is the heart of Kyiv where we are. We are now driving through another quarter of Kyiv. We are going towards railway station. We are going towards the Kyiv railway station, and we will show you the crowds at that railway station, Shiv, where people actually desperate to get out of this city, especially after the attack on Kharkiv. What they are also looking for, Shiv, here and Preeti, are weapons. We went to a checkpoint where they had only Molotov cocktails. Kuldeep ji, उनके पास Molotov cocktails तो आ गई थी, लेकिन हथियार नहीं आए थे। तो कब तक आएंगे वो हथियार, क्या उम्मीद है? उम्मीद है 1-2 दिन में हथियार आ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी जो लोकल है, यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं, वो हर आदमी हथियार मांग रहा है लड़ने के लिए, क्योंकि हर आदमी हर फैमिली से लड़ने को तैयार है। इवन कुछ लोग जो यूक्रेन छोड़कर बाहर चले गए थे, जो कि बाहर रहते हैं दूसरे देशों में, वो भी वापसी कर रहे हैं। 80,000 लोग हैं, जो आज न्यूज़ में था, जो वापस आकर हथियार लेकर लड़ना चाहते हैं यूक्रेन के लिए। लेकिन बैंकों के आगे अभी भी बहुत लंबी लाइन है, एटीएम के आगे लंबी लाइन है, एंड दे आर नॉट गेटिंग मनी। देयर इज नो मनी फॉर टू विड्रॉ फ्रॉम बैंक्स। दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि अभी कोई भी आके उसको फिलअप नहीं कर पा रहा, उनमें पैसे नहीं डाल पा रहा है जो यहाँ के एटीएम्स में है। ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लेकिन अगर आप कार्ड से कहीं भी पेमेंट करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं हुआ कि आप अपना कार्ड यूज़ कर रहे हो और आपको पैसे नहीं निकल पा रहे हैं या पेमेंट नहीं हो पा रही है कहीं पर। तो अभी पैसे की स्थिति अभी ठीक है, उतनी खराब नहीं है जितनी लोग सोचते थे। शिव, दिस इज द आइकॉनिक वॉक्साल, द रेलवे स्टेशन हियर एट कीव। द क्राउड्स दैट यू सी हियर, desperation to get out of this city before that imminent attack later today, and we are simply hoping that these talks yield some result. There's some positive result that attack can be prevented, but unfortunately that doesn't seem गलत to be रो में आ गए हम लोग। वन वे हो गया, हमें वापस जाना है। Okay, we've entered a one way. We'll take a U-turn and get out of here. But the images from Kharkiv are very scary. Kuldeep Kumar ji, Kharkiv se you are in touch with medical students. Yeah. What are you learning?
देखो खार्किव में जो है वो उनका बॉर्डर बिल्कुल साथ में ही है रशिया का, 40 किलोमीटर्स वाली बात है। लेकिन देखिए अभी खार्किव के ऊपर वो लोग अपना कब्जा नहीं कर पाए हैं, तो कीव पर आने में अभी उनको बहुत टाइम, जो उस हिसाब से कीव में आने पे बहुत टाइम लगेगा उनको। अगर वो 40 किलोमीटर जो उनसे दूर है, ठीक है, फायरिंग हो रही है, बम्स गिरा रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, लेकिन कब्जा नहीं है अभी भी खार्किव पर, जो कि बिल्कुल साथ में है रशिया के, बिल्कुल साथ में है। तो कीव पर कब्जा करने में उनको इतनी आसानी नहीं होगी जैसे कि लोग सोचते हैं, कि पहले सोचते थे 2 दिन में वॉर खत्म हो जाएगी, रशिया ये ऐसा कर देगा। Is there a fear of massive cruise missiles and ballistic missiles coming and hitting maybe the presidential palace or the parliament or military installations around Kyiv? देखिए मिसाइल्स के लिए उनको अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिसाइल तो अपने बेलारूस में बैठ के भी छोड़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना सीवियर अटैक ये आज ही कर देंगे। उनकी भी कोई कुछ सोचा होगा, उन्होंने कैसे क्या करना है कुछ सोचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो कब्जा कर पाएंगे कीव पर। A large number of accidents on the road of Kyiv. There were 2 blasts this morning, and the number of accidents taking place are an indication that people are in mortal fear. Crowds on the roadside, Shiv and Preeti, just an indication that they just want to get out of Kyiv. I mean, few would want to enter Kyiv, like our brave camera person Pavan Kumar, and Mr. Kuldeep Kumar and I, well, we are reporting from ground zero so that our viewers at India Today get to see the latest ground realities here inside Kyiv. So, air raid sirens, they were going off. But is there hope? Kuldeep ji, क्या ये उम्मीद है कि बातचीत के बाद, पहले राउंड की बातचीत के बाद तो बहुत बमबारी हुई थी, क्या उम्मीद है कि दूसरे राउंड की बातचीत के बाद बमबारी नहीं, कुछ पीछे हटेंगे और कोई मिडिल ग्राउंड निकलेगा? देखिए बमबारी तो रुकी ही नहीं है, पहली बातचीत के बाद भी रुकी नहीं है और आगे भी रुकने की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि शायद जो है कि कुछ ठीक हो। हर आदमी के मन में ये है कि 1-2% की शायद आगे शांति की कुछ वो होगा, लेकिन अब होगा या नहीं होगा भगवान जाने। युद्ध विराम लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि कुछ ऐसा किया जाए कि युद्ध पे विराम लगे, क्योंकि युद्ध के नतीजे ना रूस के लिए ठीक है और ना यूक्रेन के लिए। शिव, आपने बिल्कुल सही कहा कुलदीप जी, बट शिव एंड प्रीति, Ukraine is urgently seeking more Javelin anti-tank guided missiles. They're seeking more Stinger surface-to-air missiles. They're also seeking small arms. There is an acute shortage of small arms and ammunition. Shiv, but what is a cause for concern is some of the diplomats who are leaving, and that is a sure shot sign that things could head. It could head south. Things could deteriorate very, very quickly when diplomats start leaving a city. That's right. That's the sign that they are being given a safe passage. Gaurav, I just wanted to ask you a question that you can ask to Kuldeep ji, and it's, we're really enjoying this drive, even though it comes at such a sad time. We wish it could be a bustling Kyiv. Hope to see it bustling very, very soon. But, you and Pavan have been doing such a fantastically brave job. You're the most watched reporting team there on the ground in Kyiv by far, by miles. I want you to ask Kuldeep ji, has it ever crossed his mind to get out of Kyiv or get out of Ukraine at this time? I'm sure he has family back home in India as well, or has he decided to stay in Ukraine? Shiv, that's a very important question. Of course, his family is here in Kyiv, but that's a very important question, and let me put this question to him. Kuldeep ji, आपके पास तो साधन भी है, ये मर्सिडीज गाड़ी भी है, और आपकी पत्नी, आपके बच्चे यहाँ हैं और बमबारी होने वाली है। आपने ये शहर छोड़ के जाने का नहीं सोचा? आप अभी भी कीव में क्यों हैं? मेरे बच्चे क्योंकि बोलते हैं मुझे, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, कि अगर तू इंडिया में होता और इंडिया में अगर वार होता, क्या वहाँ से भी भाग जाता? वर्ड जो इस्तेमाल किया गया, भाग जाता। तो मैं भागना नहीं चाहता हूँ। मैं उनकी जो भावनाओं हैं उनकी कदर करता हूँ। वो बोले हम यहीं पे पैदा हुए हैं और यहीं पे हम लोग मरेंगे, लेकिन हम जितने मर्जी लोग छोड़ के चले जाए यूक्रेन, हम लोग यूक्रेन में रहेंगे लास्ट एंड तक।
और हमें पूरी उम्मीद है आज नहीं तो आने वाला कल जो है वो अच्छा होगा। हो सकता है कोई कंप्रोमाइज़ हो, कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेट निकलेगा। भाई सिर्फ यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, बाकी जो इतनी सारी कंट्रियां कुछ तो एफर्ट्स करेंगी इसको रोकने के लिए। अगर ये लड़ाई बढ़ी तो फिर ये दो सिर्फ कंट्रीज़ की लड़ाई नहीं रहेगी, इनमें बहुत सारी और कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व होंगी। Shiv, I hope to, interview Mr. Kuldeep Kumar's family. His wife is Ukrainian. His children are Ukrainian. I've seen pictures of two lovely little children, and they intend. The children apparently say that Ukraine is our land. They asked their father, "You are Indian. If there's war in India, would you run away to another country?" Great and he answer, says no. yeah. And that's when his wife and children told him, Ukraine is our country, we will fight till the end, to the finish for our country. Shiv and Preeti. That's what's made this war so complicated, isn't it? Because you have somebody who is a Ukrainian citizen but Indian origin, who had the option to leave. Think about the Ukrainians there, because right now every indication seems to suggest that this war has been made that much more complicated, that much more difficult for Russia because of the citizen militia on ground. Oh, you're absolutely right, Preeti. But the citizen militia, for them, it's the last stand. For them, they're fighting for their country. For them, they're fighting for their honor. And now it's no longer combatant, non-combatant. Everyone is a combatant now to protect their country. And unfortunately, this is also resulting in civilian areas being bombarded and targeted very extensively. Because you're right. So, Go ahead, Gaurav, go ahead. go on, Preeti. Okay, no, so what I was saying was, in Kharkiv, for example, a mall was targeted, and the excuse was that the mall had a security defense point. Similarly, a government building was targeted. That government building, an iconic government building, they said that there were defenses in that government building. That's why that building was targeted. Side of that, Gaurav and Shiv, and wouldn't it be, as we drive through... Right, go ahead. Okay, yes, Gaurav, go ahead. So, as we drive through the city, we are just trying to show you virtually every corner of Kyiv today, because this is what the world is fearing, that there would be an attack on this city, and that attack could happen anytime now. Ambulances on standby, hospitals on standby. Preeti, I also went to the church here. There is an Orthodox church in this city, and it's a 10th century church. We spoke to the rector and the director of the Theology Academy, and the church is now chipping in, giving food and shelter to refugees. The church is also, Preeti, preparing hospital beds. Church is preparing to look after people who may be injured in combat. Whether civilians or soldiers, we do not know. But the church is also chipping in. The fear is right now that... Left, right? Yes. Right, okay, yes, turning right. Yes, My yes, apologies. Please, so, please. Since I'm not very well aware of the roads here, and it's a left-hand drive vehicle and a left-hand drive country, so a little complication there. But the church is also chipping in to help people, and hospital beds are coming up inside the church with the hope that at least a religious institution, that 10th century church, will not be targeted either in artillery, grad, rocket, or even missile fire. Shiv and Preeti. I don't quite know that, Gaurav, because in Kharkiv yesterday a hospital was attacked, and that's the flip side of it all. As you take this very ominous drive, Shiv, as Gaurav takes this drive, stunning, spectacular, but the unease of it is so stark, because as we speak, Kyiv is bracing for possibly the worst attack. Maybe tonight, we don't know when it's going to happen, but it's bracing for a big siege of sorts, and we don't know if these buildings would actually be standing the next time, Gaurav would be taking, this drive. But Gaurav, that's the question I wanted to ask you. The flip side of all of this, with the citizenry getting so active in terms of taking up arms, following a citizen militia of sorts, gives an excuse to the Russians to, counter the war crime charge and say you're using them as human shields. We don't know, which one of you is the army or which one of you is a citizen which has taken up arms. So it gives them a free pass every time they bomb a civilian building.
Let me put that question to Mr. Kuldeep Kumar, and that's a very important question you've asked, Preeti. Kuldeep ji, यहाँ पर बच्चों ने भी हथियार उठाए हैं, मतलब बच्चों ने, युवा वर्ग ने और महिलाओं ने और पुरुषों ने हथियार उठाए हैं, चाहे वो सिविलियंस हो, लेकिन इससे तो रूस को एक बहाना मिल गया कि आपने हथियार उठाए तो हमने आपको टारगेट किया। सिविलियन एरियाज को भी रूस टारगेट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिविलियन एरियाज को जो रूस जो टारगेट कर रहा है। अगर आप कोई मुझे मारने आएगा, मुझे हथियार तो उठाने ही पड़ेंगे। अगर हमारे पास फोर्स कम है तो फोर्स में अगर लोकल लोग उसमें मदद नहीं करेंगे तो क्या हम बोले कि आइए जी रूस आप ले लीजिए यूक्रेन को। कोई तो यूक्रेन की हेल्प करेगा। अगर बाहर वाले लोग नहीं करेंगे, हमें खुद को करनी पड़ेगी। आपकी फैमिली में जब कभी भी कोई आपकी फैमिली के किसी मेंबर को मारने आता है तो छोटे छोटे बच्चे जो 5-10 साल के होते हैं वो भी उस पर टूट पड़ते हैं कि भाई मेरी फैमिली को मारने के लिए आया है। तो ये फैमिली है हमारी, जो लैंड है हमारी मदर लैंड है, मातृभूमि के लिए तो हर आदमी लड़ने के लिए तैयार होगा। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपने हथियार उठाया तो मैं बम मार रहा हूं आपके ऊपर। अगर आप लड़ाई को रोकिए तो हम तो मजबूरी में हथियार उठा रहे हैं। जो यूक्रेनियन लोग तो मजबूरी है उनकी। आपकी क्या मजबूरी है ये बताइए आप। ये दवाई की दुकान है यहाँ बिल्कुल, और दवाई की दुकान के सामने आप देखिए हर दवाई की दुकान के सामने लाइन लगी हुई है। कितनी लंबी क्योंकि कोरोना से भी लोग जो बीमार थे वो भी हैं और इसके साथ वार स्टार्ट हो गया। यहाँ पे पहले कोरोना का भी हाल जो था, थोड़ा पेशेंट्स ज़्यादा थे, उसके बाद वार स्टार्ट हो गया। कुछ जो शुगर, कैंसर, जो हार्ट डिजीज़ वाले हैं, जिनको रोज़ पेंसिलिन लेना है, गोली खानी है, तो उनको दवाई तो ज़रूरत है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि 2-2, 6-6 महीने का स्टॉक कर सकें। जी, लेकिन अब तो करना पड़ रहा है। तो क्या पैसे की कमी से भी लोग जूझ रहे हैं? पीपल हैविंग फेसिंग बिल्कुल जूझ रहे हैं, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। ये क्या है? ये यहाँ का स्कूल है, वाइन नहीं, मतलब आर्मी स्कूल है ये यहाँ का, मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी। यस। ओके, देयर इज अ पुलिस चेक पॉइंट। कैमरा थोड़ा नीचे अब हम लोग करेंगे। देयर इज अ पुलिस चेक पॉइंट। हमको किस साइड जाना है? राइट साइड। Right. So we're turning left. That's the military academy you see in front of you. Beautiful looking building. Question remains, Shiv, it's a beautiful building, quite like the Chetwood building, if I may. But the question remains: will these buildings continue to remain standing? And again, the question is how long will these buildings continue to remain standing? Especially, okay, Shiv, I want you to see this checkpoint. We'll have to perhaps lower the camera a little. Light off kar de. That's okay, Gaurav. Please stay safe. All precautions. Follow the rules of the forces on the ground. We'll sign off from you for the moment, Gaurav. Thanks to you, to Pavan and to Kuldeep ji. That was very enjoyable. We've just given our viewers, Preeti, what a lovely drive-through of Kyiv. And I completely agree with, Preeti, such an unreal feeling driving through a city that's under siege and under missile threat.